class. In this class, we will again continue with the DG part for your SST Chapter 12, the British Rule. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और ट्रेड करना शुरू करती है. आज की क्लास में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 17th सेंचुरी की लेटर हाफ में किस तरीके से जो है ट्रेडिंग कंपनी से क्या बन जाती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन जाती है और इंडिया को रूल करने लगती है. The latter half of the 17th century saw the emergence of a new power on India's political horizon. Can you identify this power? Yes, it was the British. In the early 17th century, the British came to India as a small trading company known as the East India Company. ठीक है, किस फॉर्म में इंडिया में दाखिल होते हैं ये एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया में आते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, ये पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं. The company initially established its base in Surat and then gradually started building its base in other parts of the country. In this session, we will understand the growth pattern adopted by the East India Company to establish itself as a political power in India in the latter half of the 17th century. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्रो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और पूरे इंडिया को किस तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेती है. ठीक है, वो पूरा पैटर्न हम डिस्कस करेंगे. बंगाल में अपना व्यापार शुरू करते हैं. In 1651, the East India Company set up its first factory on the banks of the river Hooghly. हुगली नदी के किनारे अपना जो है फैक्ट्री लगाते हैं. This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, operated. ठीक है, यहाँ से ये क्या करते थे, अपना कामकाज करते थे. The factory had a warehouse where goods for export were stored. And there were also the offices from where the company officials conducted business. The new laws passed in Britain in 1670 further emboldened the company officials in their expansion strategies in India. क्या होता है, ब्रिटेन में कुछ नए लॉ बनाए जाते हैं जिससे ये जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं ये और ज्यादा एक्सपेंड यानी कि अपना और ज्यादा विस्तार भारत में करने लगते हैं. These laws allowed them autonomous acquisition of territory, right to mint money, right to command fortresses and troops, declare war and peace, and exercise civil and criminal jurisdiction over the areas that they had acquired. ठीक है, जो भी एरिया इन्होंने कब्जा किया था उसके ऊपर जो है इनका पूरा राइट हो जाता है. मिंट मनी का मतलब होता है जैसे नोट छापना या सिक्के बनाना, इस पे इनका अधिकार हो जाता है कि ये इस एरिया में जो है करेंसी को छाप सकते हैं, जैसे नोट छपते हैं है ना, और या फिर जो है सिक्के बनाए जाते हैं वो इनको राइट मिल जाता है. दूसरा है कमांड फोर्टेसेस एंड ट्रूप्स, उनको राइट मिल जाता है कि ये जो है किले जो हैं या ट्रूप्स जो सेना है उनको कमांड कर सके. डिक्लेयर वॉर एंड पीस, कब जो है युद्ध का डिक्लेरेशन करना है, कब युद्ध की घोषणा करनी है या कब शांति की घोषणा करनी है, वो पावर इनको मिल जाती है. और सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि न्याय कर सकते हैं, कोई भी सिविल मैटर है उसको देख सकते हैं, कोई भी किसी ने क्राइम किया है उसके ऊपर अपना जजमेंट दे सकते हैं. जो भी इन्होंने एरिया एक्वायर कर रखा है, जिस भी एरिया को इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, ये सारे राइट काम करने का इनको राइट मिल जाता है. As trade expanded, the company, under the leadership of Major General Robert Clive, persuaded merchants and traders to settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement in Calcutta. कलकत्ता में ये अपना एक किला This बनाना was शुरू called करते हैं Fort William. जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता है, विलियम का किला. Did you know that in 1639, a local ruler gave Madras to the British? It was therefore made into... क्या करा, एक लोकल रूलर ने जो है मद्रास को किसको दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया.
to a trading settlement named Fort St. George. In 1668, King Charles II gave the island of Bombay to the company at a nominal rent of £10 per year. मतलब एक छोटे से किराए के बदले में, एक छोटे से जो है धनराशि के बदले में किराए पे दे देता है बॉम्बे को, किसको, ब्रिटिशर्स को। The fortification developed here was named Bombay Castle. And soon Calcutta too was under the company. और जल्दी ही जो कैलकाटा होता है वो भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनके कब्जे में आ जाता है। तो इस तरीके से देखो, बॉम्बे था, कलकत्ता था और मद्रास था, ये सब जिसको आज आप चेन्नई के नाम से जानते हो, ये सब जो है धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाते हैं। The headquarters of the company was Madras in the southern region, Bombay in the western region, and Calcutta in the eastern region. ठीक है, तो इन तीनों शहरों में इनके क्या थे, हेडक्वार्टर्स थे। The next step in the company's expansion pattern in Bengal was to request the Mughal emperor for trade concessions. How did Clive do this? अब जो अगला मकसद था वो ये था कि ट्रेड में, व्यापार में कंसेशंस किस तरीके से इनको मिले। तो उसके लिए रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ये क्या करता है, हमने चैप्टर में रीड आउट करा था। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मुगल एम्परर के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन बनाता है। In 1698, company officials bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. ठीक है, क्या करता है, ब्राइब देता है, रिश्वत देता है कि 3 जो गांव हैं उनके जमींदारी राइट किसको दे दिए जाए, ब्रिटिशर्स को दे दिए जाए। One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta, or Kolkata, as it is known today. ठीक है, पहला एक गांव था जिसका नाम था कैलिकट उस समय, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। The company also persuaded the Mughal emperor Aurangzeb to issue a farman or royal edict granting it the right to trade duty-free in Bengal. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। क्या ये जो है मुगल बादशाह जो होता है उसको मना लेते हैं कि एक फरमान इशू करे ताकि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके बंगाल में, यानी कि इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ये बिना किसी टैक्स के ड्यूटी फ्री जो है व्यापार कर सकते हैं बंगाल के अंदर। ऐसा फरमान ये इशू करवा लेते हैं। What this meant was that the company could export and import goods from and to Bengal without paying any taxes to the government. ठीक है, सरकार को कोई टैक्स पे किए बिना This व्यापार कर caused सकते थे। immense revenue loss for the Nawab of Bengal. इससे क्या होता है, जो नवाब था बंगाल का वो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है, क्योंकि जो नवाब होते हैं उनको इनकम कहाँ से होती है, जो टैक्स भरते हैं लोग उसी से तो होती है। अब टैक्स तो ये भर ही नहीं रहे थे, तो उससे बंगाल के नवाब को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। That is worse, officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay taxes. This they refused to do, causing further loss of revenue for the Nawab of Bengal. जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं वो भी मना कर देते हैं कि हम आपको कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, जिससे जो इसकी इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। Secondly, company officials were given the right to issue passes known as dastaks for the free movement of goods. They misused these passes by sometimes selling them to friendly traders. How do you think the Nawab reacted to this? इसके बाद इस नवाब ने क्या किया था, किस तरीके से रिएक्ट किया था? कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक जो है लड़ाई होती है। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. बहुत ज्यादा दोनों के बीच जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। After the death of Aurangzeb in 1717, the British East India Company purchased from the Mughal Emperor Farrukh Shiar duty-free trading rights in all of Bengal for a mere 3,000 rupees a year. 3,000 रुपए साल के बदले में ये पूरे बंगाल में व्यापार करने के
राइट्स, जिनको ट्रेडिंग राइट्स कहते हैं, वो खरीद लेते हैं कि बिना किसी टैक्स के ये बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट्स ये खरीद लेते हैं। Annoyed successive Nawabs of Bengal, Murshid Quli Khan, followed by Ali Vardi Khan, and then Sirajud-Dowla, protested. All of them were strong rulers who wanted to undermine the hold that the company was trying to gain over trade in that region. How do you think the Nawabs curbed the British? अब किस तरीके से नवाब ने जो है कर मतलब उनके ऊपर अंकुश लगाया, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, इसकी इनकम को कम कर रहे थे, क्या करते The थे? Nawabs claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue by refusing to pay taxes. Accordingly, they refused to grant the company any trade concessions. तो फिर ये Instead, they demanded large tributes in exchange for the company's right to trade. बदले में ये क्या करता है, ये कहता है कि नहीं, हम आपको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, बल्कि आप हमें पेमेंट करोगे। ब्रिटिशर्स को कहता है कि आप हमें पेमेंट करोगे, अगर आपको बंगाल में व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो आपको हमें पैसे पे करने होंगे। The Nawabs also objected to the fact that the British officials did not accord them the respect that was their due. The Nawabs accused the company of writing disrespectful letters and humiliating them. इसके अलावा नवाब को क्या बात जो है पसंद नहीं आती है कि जो ब्रिटिशर्स थे इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे और डिसग्रेसफुल जो है लेटर्स इसको लिखते थे, मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते थे इसको। It was hardly surprising then that the Nawabs set out to undermine the authority of the company by stopping it from minting coins and extending its fortification. यानी कि और ज्यादा एरिया पे कब्जा करने से रोकता है ये ब्रिटिशर्स को, और ज्यादा ये सिक्के नहीं बना सकते थे, अपने कॉइन्स मिंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये सब इन पे जो है प्रतिबंध लगा देता है। How do you think the company officials reacted to these measures taken by the Nawabs? अब बदले में फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा जब ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी नवाब ने? Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb in 1717, the British East India Company purchased from the Mughal Emperor Farrukh Shah the company, on its part, declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trading prospects of the company, and trade could flourish only if duties were removed. तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि नवाब जो है हमारे व्यापार को बढ़ने में जो है बढ़ने से रोक रहा है, और जो है ड्यूटीज लगा रहा है, कर लगा रहा है हमारे ऊपर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. ये कहते हैं कि हमें अपना व्यापार बनाने के लिए अपने सेटलमेंट्स को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और गांवों को खरीदने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा किले फोर्ट्स मतलब किले बनाने की हमें जरूरत है, तभी हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। The conflicts between the British and the Indian Nawabs culminated into a series of battles इसके बाद until क्या होता है, बहुत सारी बैटल्स, लड़ाइयाँ होने लगती हैं नवाब्स में, और ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनके the बीच में। British were finally successful in establishing their rule in Bengal. और फाइनली जो ब्रिटिशर्स तो होते हैं वो जीत जाते हैं और बंगाल में अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए करने में जो है कामयाब होते हैं। By the mid-18th century, ठीक है, here's an opportunity to recap the main points covered in this session. क्या क्या मेन पॉइंट्स हमने कवर किए हैं? एक्सपेंशन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, और कंपनी ने क्या करा, अपनी ट्रेड पॉलिसीज चेंज करी, ब्रिटेन से जो है उनको और ज़्यादा पावर मिली इंडिया में व्यापार करने के लिए। जो बॉम्बे था,
मद्रास था, कलकत्ता था, वहाँ पे इन्होंने जो है अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। उसके बाद जो है नवाब के साथ इनका, बंगाल के जो नवाब होते हैं उसके साथ जो है इनके कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट्स जो है मुगल सम्राट से जो है हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद इनके कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं और बहुत सारी बैटल्स इनकी होती है, और जिन बैटल्स में ये इन नवाब को हरा देते हैं और बंगाल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।